So you can see idiosyncrasy and drug dependence. The two topics very small. So let's start with idiosyncrasy and drug dependence. So what is idiosyncrasy? This is asked multiple times in your MCQs. Idiosyncrasy, it is very important for Viva, especially for your planned Viva. Idiosyncrasy is defined as the individualizing quality or characteristic of a person or group and is often used to express unconventional behavior or peculiarity. क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है an unusual individual reaction to food or a drug. For example, Panadol is decreasing the body temperature in normal persons. और अगर मैं किसी पर्सन में पेनाडोल दूं ऐसी कंडीशन में कि वो उसका टेम्परेचर लोअर करने की बजाय उसका टेम्परेचर हाई करना शुरू हो जाए, so that will become the idiosyncrasy. It is an unusual individual reaction. This response is to because of the individual. This response is not because of the manufacturer or the drug. ये जानना जरूरी होता है कि कौन सी ड्रग्स की इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन शो करती हैं. अब देखिए, एक बंदे ने पेनाडोल खाई, उसका बुखार कम हुआ. एक बंदे ने पेनाडोल खाई, उसकी किडनी फेलियर हो गया. तो अब हम जाके पकड़ेंगे फॉर्मुलेशन वाले को कि भाई इस बंदे का किडनी फेलियर हो गया, but the underlying defect is within the person taking that drug. This is the idiosyncrasy, that unconventional behavior or peculiarity of a person or a group of person towards the drug, an unusual individual reaction of a food or a drug. This is very important for your Viva. So it is defined qualitatively. This was your MCQ. It is defined qualitatively abnormal response. We cannot calculate. We can't calculate the response. We can't measure the response. This is the qualitative, that this drug was doing lowering of temperature in this person. How this drug increased that temperature in this person? So there must be some defect in the manufacturing or the drug or the person. So if the defect is within the person, this will be idiosyncrasy. So idiosyncrasy, the characteristic of idiosyncrasy can be seen even after the first dose. If you give the dose, the person shows the signs of kidney failure instead of lowering the temperature. Taking example of Panadol, highly unpredictable. We can't predict. That's why this is a qualitative abnormal response. Has a genetic basis. This is very important. If the DNA of that person is genetically not effective as that of another person, so this will have genetic basis. Seen only in small percentage in population. So there may be one person in 1 lakh जिसका body temperature Panadol खाने से बढ़ा होगा, बढ़ जाएगा instead of decreasing. So it can be fatal. It can be fatal. Even the first dose can be fatal. So I will be telling multiple examples. For example, chloramphenicol. Chloramphenicol is an antibacterial. It is a broad spectrum antibacterial. It is the bacteriostatic drug. अब ये क्या करती है कि ये बोन मैरो की सप्रेशन कर देती है कुछ लोगों में, स्पेशली बच्चों में. जो बच्चे होते हैं ना, अभी प्री मेच्योर होते हैं, अभी बोन के होते हैं, उनके अंदर ये एप्लास्टिक एनीमिया करती है. यू नो एप्लास्टिक एनीमिया इज द इरिवर्सिबल बोन मैरो सप्रेशन leading to decrease in the blood cell counts, decrease in the RBC, decrease in the platelets. So aplastic anemia, one example is aplastic anemia seen with chloramphenicol in certain persons having the certain genetic basis. Chloramphenicol causes aplastic anemia. Another example, you have studied this example, very important, individual with G6PD deficiency. G6PD deficiency, you have studied this in the uses of NADPH in the biochemistry. कि जब उनको सर्टन ट्रिगर होता था, जैसे ऑक्सीडेंट ट्रिगर होता था, या वो सर्टन एंटीबैक्टीरियल, एंटीपायरेटिक, एंटी माइक्रोबियल, द 3 A's ड्रग खाते थे, तो उनके अंदर हेमोलिसिस स्टार्ट हो जाती थी. सो दिस इज सीन इन सम इंडिविजुअल्स, नॉट ऑल द इंडिविजुअल्स. कि G6PD डेफिशिएंसी के साथ हर इंडिविजुअल के अंदर ये नहीं होता कि वो डोज ड्रग खा रहे हैं तो उनके अंदर ये इफेक्ट्स आ रहे हैं. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इडियोसिंक्रेसी. The second example, so as I have told you 2 examples, there are multiple examples of idiosyncrasy. You will see these examples also in the pharmacogenomics, our last topic of this session. That will be after few days, the pharmacogenomics. उधर दोबारा मैं आपको multiple examples पढ़ाऊंगा. उसमें एक बड़ी important example आएगी, that will be of succinylcholine. Very important, the succinylcholine, और उसका बड़ा toxic effect होता है. So our last topic, that is the drug dependence or drug abuse. What is drug dependence? So drug abuse, you know that especially in Lahore, you have seen multiple persons lying on the footpath, especially at the site of Chaburji.
You have seen multiple, and even surrounding our hospital, you have seen many drug addicts. You have seen they are lying on the footpaths injecting the drugs. So what is drug abuse? So, taking a drug for any reason other than a medical one. This is drug abuse. The definition is very important. So, they are taking even if you take a drug for any reason other than a medical one. For example, you are taking a drug to relieve your physiological anxiety. Physiological anxiety. You are taking caffeine, for example. You are taking Sting contain higher concentration of caffeine and nicotine. You are consuming nicotine and caffeine uh, too much for any reason other than a medical one, for any other than medical illness, just to give you a stimulant effect. You are taking the stimulants. You are taking the antidepressants just to give you a stimulant effect, just to enjoy, just to enjoy the layer without any medical one. This will become the drug abuse. Taking a drug without any reason, then a medical one. So to get why we take a person drug? To get a feeling of euphoria. To get a feeling of euphoria. क्या मतलब है? अब ये चर्सी वगैरह जो पड़े होते हैं हॉस्पिटल के पास, वी हैव सीन, ये ड्रग ली होती है, इनको पता नहीं होता आस पास क्या हो रहा है, ये जन्नत में पहुंचे होते हैं. So this is to get a feeling of euphoria, that highness, to enhance athletic ability. For example, athletes are injecting the steroids. They're injecting the steroids without any medical purpose. So who is addictive? Who is addictive? So if it causes uncontrollable compulsive drug seeking and use, even in the face of negative health and social consequences. क्या मतलब है? बंदा इतना उसका डिजायर होता है कि मैं ये ड्रग खाऊं ही खाऊं, खाऊं ही खाऊं. उसको पता होता है कि मैं ड्रग खाऊंगा तो मुझे साइड इफेक्ट्स आएंगे. वो कहता है नहीं, मैंने खानी ही खानी है, मैंने ये ड्रग खानी खानी है. अनकंट्रोलेबल, उसे कंट्रोल नहीं होता, वो कभी दीवार में सर मारता है. यू हैव सीन इन द मल्टीपल मूवीज ड्रग एडिक्ट. इफ वी उनको होता कुछ नहीं है, लेकिन उनको ऐसे लगता है कि हम मर जाएंगे. अनकंट्रोलेबल, वो चीखते हैं घर में, धाड़े मारते हैं और कहते हैं मुझे ड्रग ला के दो, ला के दो. सो उनको पता होता है कि हम खाएंगे मर भी सकते हैं, लेकिन फिर वो कहते हैं ला के दो. दिस पर्सन इज एडिक्टिव. वी विल लेबल दिस पर्सन एडिक्टिव. A person is labeled addictive if it causes uncontrollable, compulsive drug seeking and use, even in the face of negative health and social consequences. And it results from physiological and physical dependence. दो टाइप्स की होती है डिपेंडेंस, फिजियोलॉजिकल एंड फिजिकल. फिजियोलॉजिकल होता है कि बंदे को लगता है कि मैं ड्रग नहीं खाऊंगा मर जाऊंगा. फिजिकल होता है कि उसकी बॉडी कांपने शुरू हो जाती है, उसकी बॉडी को अगर ड्रग ना मिले, बॉडी के सेल्स की डेथ हो जाती है. सो दीज आर द टू कंपोनेंट्स फिजियोलॉजिकल. कुछ लोगों में फिजियोलॉजिकल होती है डिपेंडेंस, कुछ लोगों में साइकोलॉजिकल होती है. जब ये दोनों डिपेंडेंस हो जाती हैं, दोनों हो जाती हैं, फिजियोलॉजिकल भी और साइकोलॉजिकल भी, देन वी लेबल द पर्सन एज एडिक्टिव. So you can see drug dependence in condition in which a person has continuing desire to take the drug, compulsive craving to take the drug. The demand of the drug dominates the lifestyle of the individual. उसको नहीं पता होता आसपास क्या है, वो कहता है ड्रग ला के दो बस मुझे, मैंने कोई काम करना है, खाना खाना है, नहीं खाना, मुझे ड्रग ला के दो. This state of periodic or chronic intoxication occurs after excessive, repetitive, persistent self-administration of certain drugs. So remember, never take a drug if not prescribed. Never take a drug other than medical one. मेडिकल स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको पता होता है ये डिफरेंट ड्रग्स हैं, वो ऐसे ही मुंह उठा के खाते रहते हैं. दिस कैन लीड टू एडिक्शन. और एडिक्शन होगी तो आप लोग फिर ड्रग को, इवन यू योरसेल्फ नोइंग दैट दिस ड्रग इज डेंजरस, कांट रेजिस्ट, उसको रेजिस्ट नहीं कर सकेंगे. सो इट इज हार्मफुल फॉर हिम एंड फॉर द कम्युनिटी. कम्युनिटी के लिए भी हार्मफुल है कि वो पर्सन जो इल्यूजन्स में हो, हेलुसिनेशंस में हो, वो जाके लोगों को मार सकता है. दे कैन किल द पर्सन, दे कैन परफॉर्म सर्टेन unlethal, un-Islamic acts also in the streets, throwing the pebbles on the passengers. He or she can kill the passengers. He or she can kill the passerby. He can spit the saliva on the passerby. So this is dangerous for harmful not only for him because he will become mentally unstable, but also for the community. So the last two slides, the definition of WHO from Viva, कि WHO किस तरह डिफाइन करता है ड्रग डिपेंडेंस को. सो इट इज अ ब्रॉड डेफिनेशन कवरिंग ऑल एस्पेक्ट्स. अ स्टेट generally psychic that the person is mentally unstable, but sometimes physical that the physiological, the dependence component,
that result from interaction between the living organism and certain drugs, leading to behavioral other responses that always include a compulsion to take the drug periodically or constantly to obtain its psychic effect, euphoria, or to avoid the discomfort of its absence. This definition आपकी जान कभी नहीं छोड़ेगी. ये थर्ड ईयर में भी है, फोर्थ ईयर में भी आएगी, फाइनल ईयर में भी आएगी, और आपसे पूछेंगे. You will see this definition in the community medicine. You will see this definition in the pathology. You will see this definition at all places. कि ड्रग डिपेंडेंस का मतलब क्या है कि जनरली साइकेट्रिक पेशेंट्स में होती है, फिजिकली भी होती है, और उसके अंदर ये होता है कि ऐसा बिहेवियर चेंज होता है बंदे का, उसमें से एक कंपल्शन होती है बंदे को, मैं ड्रग खाऊं ही खाऊं, 2 दिन बाद खाऊं, 3 दिन बाद खाऊं, मैं ड्रग खाऊं ही खाऊं. क्योंकि उसको ये होता है कि अगर मैंने ड्रग नहीं खाई तो मुझे ये नुकसान हो सकते हैं, और या उसको एंजॉय करने के लिए खाता है. सो इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं ड्रग डिपेंडेंस के? यू दे कैन आस्क इन द वाइवा, डिफाइन ड्रग डिपेंडेंस, गिव द कंपोनेंट्स. सो यूफोरिया, अब किसी बंदे को कोई फायदा होगा तो ड्रग खाएगा ना. यूफोरिया. टॉलरेंस, टॉलरेंस होता है कि अब बंदे के अंदर टॉलरेंस डेवलप हो जाती है. दिस इज अवर नेक्स्ट लेक्चर टुमारो इंशाल्लाह. व्हाट इज टॉलरेंस? टॉलरेंस ये होती है कि बंदे के अंदर एक तरह की रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है, फिर उस बंदे को डोज बढ़ानी पड़ती है. इट इज़ वेरी कॉमन इन साइकेट्रिक पेशेंट. इवन द मदर ऑफ माई फ्रेंड, इवन शी वर डॉक्टर, शी डाइड. उनको शिजोफ्रेनिया डायग्नोज हुआ, ड्रग खानी शुरू की, 2 दिन बाद 4 खा ली, 3 दिन बाद 5 खा ली, 5 दिन बाद 10 खा ली, और एक दिन 3 पत्ते खा लिए, उसी वक्त डेथ हो गई इनकी. क्योंकि टॉलरेंस डेवलप होती रहती है, वो रिस्पॉन्सेज आना कम हो जाते हैं, ड्रग डोज को बढ़ाना पड़ता है. सो वो रिस्पॉन्स के लिए बंदा. देन अदर कंपोनेंट इज साइकिक डिपेंडेंस, दैट इज दिस मेंटल फिजियोलॉजिकल एब्सटिनेंस. एब्सटिनेंस होता है विथड्रॉल सिंड्रोम, कि अगर उस बंदे को वो ड्रग ना मिले तो वो उसके अंदर सर्टेन सिम्टम्स आते हैं. यू विल स्टडी दिस इन द सीएनएस फार्माकोलॉजी, जिसको कहते हैं एब्सटिनेंस. सो यूफोरिया, यू नो द प्लेजेंट फ्लोटिंग सेंसेशन. बंदा जो होता है जन्नत में घूम रहा होता है और उसको पता नहीं होता आसपास करते. पर्सन इज हैप्पी, उसके घर में कुछ भी हो जाए और उसको खुशी होती है. Tolerance, as I already told you, tolerance, I will be telling you the different types of tolerance in our next lecture, in our next video. The tolerance is decrease in response to drug requiring the increase in dose to achieve the initial effect. कि अब effects नहीं आ रहा, dose बढ़ानी पड़ी है. So there can be pharmacokinetic tolerance, pharmacodynamic tolerance, and cross tolerance. Name shows the pharmacokinetic will be related to the pharmacokinetic portion, absorption, distribution, biotransformation, and excretion, and distribution. And the psychic dependence, the person is psychological dependent. For example, tea. जिन लोगों को बहुत ज़्यादा शौक है चाय पीने का, कॉफ़ी का, स्मोकिंग का, दे आर आल्सो एडिक्टिव, दे आर आल्सो लेबल्ड एज एडिक्टिव. फिजिकल डिपेंडेंस है. फिजिकल डिपेंडेंस है कि फिजियोलॉजिकल नॉर्मल बॉडी के फंक्शंस नहीं होना शुरू खत्म हो जाते हैं जब तक ड्रग ना मिले इसको. सो द पर्सन डिपेंड्स ऑन द ड्रग फॉर नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटीज. So abstinence, last component is abstinence and withdrawal syndromes. A condition, very important, a condition to describe the signs and symptoms that occur on withdrawal of a drug in physically dependent person. So जो बंदा फिजिकली डिपेंड हो, अब उसकी ड्रग खत्म कर दें, so उसकी बॉडी के अंदर ऐसे सिम्टम्स आते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द मैनिफेस्टेशंस आर ऑपोजिट टू दैट ऑफ ड्रग. अगर वो बंदा मॉर्फिन खा रहा है नींद के लिए, पेन कम करने के लिए, कॉन्स्टिपेशन, मॉर्फिन प्रोड्यूसेस स्लीप, रिलीफ ऑफ पेन, कॉन्स्टिपेशन. अब अगर वो ड्रग डिपेंडेंट है, उस पर एडिक्टिव है, वो नहीं ले रहा, तो अब क्या होगा? विड्रॉल विल प्रोड्यूसेस इंसोम्निया, पेन ऑल ओवर द बॉडी एंड डायरिया. अब इससे प्रिवेंट करने के लिए वो ड्रग लेगा. So the last component is the abstinence or the withdrawal symptoms. So the 5 components, they are the 5 components: the euphoria, the tolerance, the pharmacological dependence, the physical dependence, the physiological dependence, and the abstinence and the withdrawal symptoms. So this was our today's lecture. Jazakallahu khair wa ahsanal jazai fi darain. If you have any question, you can ask in the chat box.